Hello, everyone, and welcome back to Pelican Podcasts. I'm your host, Hooreen Farooqi, and today we'll be talking about a very, very interesting topic, a topic that's not discussed as much as it should be nowadays. Yes, it's mental health. So, for that, we have our very own Fatma Tahir over here. Hello guys, I'm the president of the Vitruvian Club, Fatma Tahir. Hello, Fatma. It's very nice to have you today. It's a pleasure. So, mental health, isn't that what Vitruvian Club is all about? Yes. So, what is mental health? Mental health is basically a person's emotional, social well-being. It's a lot like stigmatized and stuff like that, but it's not really that deep actually. But आजकल because of the, I guess, physical health is more preferable to people के we क्या बोले focus on our physical health more. But actually, I would be lying if I say that people tend to ignore their state of minds. So yeah. Exactly. It's like how you said, okay, physical health is also like an Yeah. important factor, but Our club, the Vitruvian Club, we focus on physical health too. But I guess the focus right now on the podcast too is mental health, and it's an important thing nowadays that people tend to ignore. exactly, I'd say mental health is a topic that's on the rise right now, Yes. especially during the pandemic. Yeah. I've seen a lot of mental health cases as well as just some types of Yeah. signs that you may ignore, no? Yeah. Especially in young teenagers and young students. Yeah, So, what because is of your the take on that? Closure of schools, there's physical distancing, there's isolation. So because of that, people have been facing stress, depression in some cases. So yeah, definitely because of the pandemic, and there's challenges that students face nowadays Exactly. because of the pandemic. In that, I would include that we have lost a healthy diet or whatever is that called. We are not getting the adequate sleep. उसकी वजह से भी stress trigger होता है, frustration trigger होती है, और obviously there's studies too. Studies का अलग ही बहुत से factors हैं, और pandemic Exactly. उसको मतलब double कर दिया एक तरह से. That's what I I'd would say that mental health really does affect your own school life as well as social life as well. Like you don't do as productive, you're not as productive, you don't do as well in school. है ना? People do not reach out क्योंकि पेंडेमिक हो गया है. लोग जो हैं बहुत कम फेस टू फेस कॉन्वर्जेसन तो बहुत कम है. तो हाँ, डेफिनेटली फेस टू फेस कॉन्वर्जेसन बहुत कम है. इसके अलावा आस्किंग फॉर हेल्प, रीचिंग आउट. Asking for help. हाँ, पेंडेमिक के अलावा भी इन लाइक नॉर्मली जब था तो ये था कि आपको कोई मसला चल रहा है या जो भी है, आप अपने दोस्त को नहीं बता पाएंगे कि आई एम फेसिंग दिस. अगर कोई फिज़िकल चीज़ हो, मुझे हंसी भी आती बोलते हुए कि अगर कोई फिजिकल मसला हो तो ऑब्वियसली यू जस्ट गो अहेड और बात, लेकिन अगर कोई मेंटली फेसिंग समथिंग या जो भी है तो यू हेजिटेट. It's kind of considered as a taboo subject. Like पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट. फर्स्ट पहली बात तो ये, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट. दिस अगर आप उनको, ज़्यादातर मैंने ये देखा है केसेस में कि लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि जब वो बताते हैं तो वो द अदर जो भी आप जिसको भी बता रहे हैं वो आपको आपके मेंटल हेल्थ स्टेटस की तरफ से देखेगा, एज इंडिविजुअल नहीं. वो आपको सुनेगा लेकिन वो बोलेगा ओह ही इज़ डिप्रेस्ड, राइट? नहीं, आप जो हैं जब व्हेनेवर यू आर लिसनिंग टू समवन, just listen, that's it, that's all it's about. आप ये नहीं बोले oh so you're depressed basically. exactly. So we as a society need to look at mental health in a different way, from a different perspective as well. So Fatma, what would you say the top challenges for students are during the pandemic right now regarding mental health? I think कि guilty pleasure जो pandemic के दौरान चल रहा था वो था Yes. excessive use of the social media. I Social agree. media and news too कि जो death rates आ रहे थे and they were death rates, और बाकी आप जो है नॉर्मली कोई भी चीज़ें वायरस के बारे में देख रहे हैं कि ये हो रहा है, उसकी वजह से वो एक अलग स्ट्रेस है. ऊपर से जो भी आपकी रूटीन जो मेस्ड अप चल रही है उसकी वजह से जाहिर है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं. जो आप चीज़ें जाहिर सी बात है, जो आप नॉर्मल लाइफ थी आप इतना फोकस नहीं करते थे सोशल मीडिया न्यूज़ या जो भी सोशल मीडिया टैबूज निकल रहे हैं. Yes, I agree 100%. इनसिक्योरिटीज़ जो है वो राइज पे थी आइसोलेशन की वजह से. तो हाँ डेफिनेटली सोशल मीडिया का जो एक्सेसिव यूज़ हुआ है पेंडेमिक के दौरान वो
Exactly, just like how you said, an excessive use of social media as well as the क्या कहते हैं, Isolation. unbalanced routine, isolation. These are all what leads to mental health Everything, yeah. challenges, especially for teenagers right now. Because I've heard like a research that says that mental health cases affect 19% of adults and 46% of teenagers. Definitely. Well, Suicide rates even went up during the pandemic. तो हाँ, mental health, we cannot ignore it. exactly. As much as we हाँ physical health पे आप focus करो, लेकिन definitely mental health you have to, खासकर pandemic के दौरान we need to talk about it. I'm really thankful कि podcast हुआ है mental health पे भी. Yes, of course, it's something that we should really discuss about right these days, and that's why we have our very own Vitruvian Club with us in the PF chapter as well, where students can reach out whenever they'd like. So Reach out भी, और we're planning on events, normal events जैसे just Exactly. going out. Oh, wow. क्योंकि that's not been normalized अभी जो है. अभी बाहर जाना इतना नॉर्मल नहीं हुआ. हाँ, ऑब्वियसली पेंडेमिक इतना नहीं रहा, इतना वो नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अभी जो हमारा फोकस है कि बस आप सिंपल इवेंट्स दैट जस्ट इंक्लूड्स लाइक फेस टू फेस कॉन्वर्जेशंस, क्योंकि दैट्स बिन नॉट कॉमन एट ऑल सिंस 2019 ऑब्वियसली. तो हाँ, विट्रूवियन क्लब का यू रीच आउट टू अस, वी ऑल्सो फोकस ऑन फिजिकल हेल्थ. ऐसा लग रहा है कि that's very nice. The Vitruvian Club is really open to everyone, for everyone to come in. So Fatma, like, since we've talked about all of these challenges regarding the students that they face these days, so what would you say, like, what advice would you give to those students that are suffering from mental health issues of any kind right now? हाँ, I think के reach out. It may be Yeah. hard, लेकिन जैसे Reaching O out to levels, some हाँ, adult or जैसे मेरा O levels था और अभी A levels में आई हूँ, इतना नहीं था कि आप किस मतलब बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं थी. अभी जो विट्रूवियन है ऑब्वियसली कैन रीच आउट टू अस, हम तो बेसिकली हैं ही, हमारा पर्पस ही है, बट एक्चुअली रीच आउट टू योर फ्रेंड्स टू. Exactly, I think friends are such an important part of your life, you know. ऑब्वियसली, और जो फ्रेंड्स हैं जो भी, और वो खुद भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी ऑल गो थ्रू समथिंग, जो भी है, वी आर गोइंग थ्रू समथिंग. We can never say that we've never felt a certain हाँ. way ever in our life, you know. और अभी भी मैं कुछ बोल रही हूँ, आई एम एडवाइसिंग समथिंग समवन ऑन इट, और जो भी है, लेकिन आई ऑल्सो गो थ्रू स्टफ. ऐसा नहीं कि आई एम परफेक्ट और फिर मैं एडवाइस दे रही हूँ. हाँ, यू कैन, बट इससे ये होता है इफ़ यू रीच आउट यू फील लाइटर. कुछ नहीं, ऑब्वियसली फ़ॉरन फिक्स नहीं हो जाता सब कुछ, लेकिन वंस यू रीच आउट एंड द वंस दैट आर हियरिंग, बस सुनो, डोंट अपनी ओपिनियंस नहीं दो, ओ डू दिस, ओ गो टू स्लीप अर्ली. आई मेंशन कि मेंटेन योर डाइट और ये सब, लेकिन आप एडवाइस नहीं दो आगे से. ऑब्वियसली यू आर नॉट अ प्रोफेशनल. फ्रेंड्स होते इसलिए कि आप सुनो. तो हाँ, मेरी एडवाइस यही होगी कि That's a listen. that's a very nice way to put it. Exactly, because like as friends, it's our job to, you know, encourage each other. It's our job to take care of each other. So like I'd say that sometimes people don't really need any advice. Maybe they just need a listening ear, as compared to a helping hand. They just need someone to listen. Definitely, So yeah. so you'd like the listeners to know that if you have someone, if you know someone who's struggling with mental health issues, then just be there for them, right? और एक मैसेज जो बेसिक है और लोग बोलते ही नहीं है कि सीक प्रोफेशनल हेल्प टू. इफ़ इट्स लाइक पेंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली बहुत राइज हो गया है डिप्रेशन और इन सब के केसेस में, तो इट्स नॉट बैड टू एक्चुअली रीच फॉर प्रोफेशनल हेल्प. तो हाँ, यू लाइक टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल, बट मतलब अगर इट्स समथिंग यू नो यू कैन गेट अ हैंग ऑफ, और जो भी है इट्स अनकंट्रोलेबल, या जो भी आपके अर्जेस हैं, तो definitely get professional help. That's Getting professional help. I totally agree with that. So that is the message that you would like to Yes. let our listeners know. हाँ, तो yeah, that's what our club is also about, the Vitruvian Club. We focus, मैं बार बार ये बोलती हूँ क्योंकि obviously मेरे जो अंडर हैं जो physical director, जो emotional director, they have different tasks और ये सब, लेकिन जो चैप्टर ने जो विट्रूवियन क्लब इनिशिएट किया है, आई थिंक इट्स बेस्ट थिंग, और अभी तक के बेस्ट क्लब्स में से है. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एक्चुअली अप्लाइड टू. अनफॉर्चुनेटली आई गॉट इट. लेकिन हाँ, तो डेफिनेटली रीच आउट टू मी, टू एनी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, और आप खुद भी अगर आप रीच आउट कर रहे हैं, बी ओपन.
आप खुद भी ओपन हो जाएं कि लाइक लोग आपसे बात करने आए, डोंट लाइक पुट अप अ वॉल, आप बात करें. It's very nice message, Fatima. So I guess that everyone should do their part in spreading awareness in Definitely. this cause, right? Because it should be something that we should talk about. Yeah. Exactly, just like how we're doing a podcast on this right now. Yeah. It should be discussed as well because it's such on the rise these days. Again, thank you so much for giving your Thank you input for on having mental me here. health. Yeah, thank you so much for coming Thank you for here. doing this podcast actually. No problem. And I'll see you all next time. Allah Hafiz.